Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our week 11th lecture on one-way ANNOVA and use of Tukey's post-hoc test and the other tests. First of all, very brief description in our today's lecture will be divided into different sessions. The first session is about one-way ANNOVA, estimating the Levene test, and then based on findings from the Levene test, we decide to go for either Tukey test or some other test. So how to follow it? First of all, what is one-way ANNOVA? One-way ANNOVA is actually for the purpose of comparison of different categories of a variable across another variable which is continuous, which is of ratio form. जैसे income. Income is a ratio form variable, a continuous variable जिसकी values होती हैं. इसी तरह expenditures, a continuous variable. लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि whether expenditures, the average expenditures or their variances are equal across different categories of goods and services which we purchase every day, or they are different. तो हमारी assumption ये होती है in one-way ANNOVA test कि average expenditures, for example, if we are taking expenditures as an example in today's lecture, तो हमारे जो average expenditures हैं on different categories of goods and services, they are on the average same, identical. Their mean are identical. Their variances, any variances of the expenditures on different categories are identical. तो ये assumption जो है अगर हम टेस्ट करें तो इसको हम one-way ANNOVA टेस्ट कहते हैं. अब इसके different steps हैं. मेरा ख्याल है instead of spending much time on the explanation, I will directly go to the data file. We will be using in today's lecture SPSS, and the data file which I have chosen, which I have selected, is from the source which I have already explained. For example, either you can go to program files like this and IBM, and then in IBM statistics and 24th version, and there is a sample folder. Here there is option of English, and there is a file on credit card. So this is credit card, a file which I have selected. Where is that? Credit card. This file which I have copied from here, and then I have opened it like this. Let me close down the output, which I will be doing again because I did it earlier. No, I don't want to save. So this is my file, Control T. This is the actual file which we will be using for the purpose of one-way ANNOVA. Now just read the variables specifications before we start applying ANNOVA. So इसमें we, as I mentioned earlier, one variable is continuous. For example, spending, amount spent. And amount spent, you can see here, the amount spent is a continuous variable, 167.81, 809.87, and so on. And the type of commodities which I have shown here, which is given in this file, Control T में हम जाए तो हम देख सकते हैं the type of file जो है हमें type of commodities जो हैं वो कौन-कौन सी हैं. One is for grocery type expenditures, and 2 indicates the retail expenditures, and 3 entertainment, travel, other, and so on. There is also another variable which is actually credit card, different types of credit card which we are using, which have been listed here. For example,
if customers are using American Express, Visa, MasterCard, or Discover, or some other. So this is brief description of the data set. Now, without wasting time, we go to analyze, compare means, and here either you should compare the means and try to apply the Levene's test for the purpose of comparison of the average expenditures on different categories of goods, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्रोसरी है, रिटेल है, ट्रैवलिंग है, एंटरटेनमेंट है, वगैरह वगैरह। अगर तो पहले वो चेक करना हो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली वन वे अनोवा पे जाएंगे और इसका एक तरीका ये है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और इसको हम डिस्प्ले वेरिएबल्स डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स, इस तरह जरा वेरिएबल्स देखने में आसानी रहती है। स्पेंडिंग एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, टारगेट या ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट लिस्ट कहते हैं। यहाँ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट टू कीप आवर केस सिंपल, आई हैव ट्रांसफर्ड ओनली वन वेरिएबल। जो हमने देखने हैं कि ये जो एवरेज एक्सपेंडिचर्स हैं मंथली, वीकली या एनुअली या एनुअल एक्सपेंडिचर्स, ये अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऑन द एवरेज सेम है, उनका वेरिएंस सेम है इन एक्सपेंडिचर्स का ऑन डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट है। ऐसा क्यों जानना चाह रहे हैं? एक क्रेडिट कार्ड सर्वे बेस्ड डाटा में ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? देखें, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। ATM इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसी तरह क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे वो उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती हैं, उनकी चार्जेस होते हैं, उनकी फी होती है, बैंक की एक पॉपुलैरिटी है अमंग द कस्टमर्स वगैरह। तो इसके लिए वो जानना चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स जो है वो कहाँ कैसे एक्सपेंडिचर्स इनकर करते हैं, ताकि वो डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट रिटेल शॉप के ऊपर, डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट मार्केट प्लेस के ऊपर वो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके टू दी कस्टमर्स, टू दी सेलर्स, द शॉपकीपर्स, बोथ एट द सेम टाइम। ये पर्पस होता है, इसलिए ये इस किस्म की स्टडी की जाती है। तो ये टाइप जो है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने आपको दिखाया कि इसमें 5 कैटेगरीज हैं, यानी 5 कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि एवरेज एक्सपेंडिचर्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज वो सेम है या डिफरेंट है। हमारी अजम्पशन ये है वन वे अनोवा में कि वो सेम है। इसी तरह आगे ये लेविन टेस्ट के लिए हम करते हैं होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस टेस्ट। इसी तरह ये जो है ये हमारे फर्दर टेस्ट हैं जो हम अभी नहीं कर रहे, ये आगे चल के हम करें। अभी हम इस केस को सिंपल रखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये जो ब्राउन फोर्सिथ और वेल्च टेस्ट हैं, ये रोबस्टनेस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये होता है कि होमोसेक्डास्टिसिटी। लेकिन अगर the assumption of homoscedasticity is violated, then there is an issue or there is a question of robustness, whether the results which we are obtaining, are they reliable, or there is some problem in terms of measuring the effect in the presence of heteroscedasticity या heterogeneous variance। तो फिर वो रोबस्टनेस के लिए हम ये 2 ऑप्शन ये हम बाद में करेंगे। मीन्स प्लॉट, दिस इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग द एवरेज एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू एंड देन पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक का क्या मतलब है? पोस्ट हॉक टेस्ट 2 किस्म के हैं। एक ये कि जब हमारी अजम्पशन हो कि वेरिएंसेस आर इक्वल, तो फिर ये सारे कैटेगरीज हैं, और अगर ये अजम्पशन वायोलेट हो रही हो तो फिर हम इन कैटेगरीज में से ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं।
तो लिहाजा रिजेक्शन ऑफ assumption या रिजेक्शन ऑफ null hypothesis इज एक्चुअली आवर रिसर्च हाइपोथेसिस। तो अपने रिसर्च हाइपोथेसिस की सपोर्ट में फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी और इसके अलावा रोबस्टनेस टेस्ट भी हम अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल इसको कंटिन्यू करेंगे। आई वांट टू शो यू के व्हाट डज वन वे अनोवा मीन एक्चुअली, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली, हम इसको ओके करते हैं। ये रिजल्ट्स जो आए हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको हमने इंटरप्रेट करना है, हमने समझना है कि वन वे अनोवा का मकसद क्या है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ कमोडिटीज है, डिफरेंट कैटेगरीज में इनको ग्रुप किया गया है। ग्रोसरी है, रिटेलिंग है, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, अदर। ये उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी सैंपल साइज है हर कैटेगरी के अंदर नंबर है, और टोटल जो सैंपल साइज है हमारा वो लंबा चौड़ा है 26,280। याद रखें वन वे अनोवा के लिए, रोबस्टनेस के लिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए जितना सैंपल साइज ज्यादा होगा उतने रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को, ये बहुत सिंपल है, हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एवरेज एक्सपेंडिचर्स हमें नजर आ रहा है कि रिटेलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा एवरेज एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। आप देखें 312 है, और किसी भी कैटेगरी पे 312 यानी 312.58 पैसा, या अगर ये डॉलर में है तो 312.57 यूएस डॉलर और एनी अदर करेंसी। तो ये एवरेज एक्सपेंडिचर्स हैं। तो मैक्सिमम average expenditures are being incurred on retail products, और बाकी सेकंड नंबर पे फिर बाकी अदर हैं, miscellaneous other expenditures, average expenditures, and similarly and then the others. For example, थर्ड नंबर पे traveling के ऊपर है और वगैरह। And then we need to look at the standard deviation. If you take the ratio of mean and standard deviation, that actually tells us the consistency of expenditures on different categories, whether the expenditures on these 5 categories are by chance different or the client is consistent in his attitude towards expenditures on different types of categories of goods and services. बाकी 95% confidence interval जो mean जो है it follows between this and this, this and this and so on. Minimum, maximum, normal एक information है, general information है, but the most important thing is test of homogeneity. याद रखें मुमकिन है कि आप जो SPSS का वर्जन यूज कर रहे हों उसमें यहाँ पे ये जो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंसेस है, यहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज आए, मीन हो, मीडियन हो, या एडजस्टेड मीडियन या एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द मीडियन, या इस तरह की कुछ एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, यानी मीन मीडियन कंपैरिजन हो। लेकिन मेरे पास जो SPSS है उसने सिर्फ यहाँ पे इसको ये लेविन टेस्ट स्टैटिस्टिक मुझे दिया है, और ये बता रहा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएंसेस। इसका मतलब है हेट्रोजेनाइट, इसका मतलब है हेट्रोसिडास्टिसिटी की तरफ ये मुझे हिंट कर रहा है, यानी जो वेरिएशन इन द एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफरेंट कैटेगरीज इट इज नॉट द सेम। फिर यहाँ एनोवा को हम देखते हैं। एनोवा जो है वो एफ स्टैटिस्टिक बेस्ड है, जिसमें 2 मेजर कैटेगरीज हैं, बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स। बिटवीन ग्रुप्स से यहाँ क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल इन आवर केस देयर आर 5 ग्रुप्स, जिस तरह ये ऊपर बताया गया, ग्रोसरी, रिटेल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड अदर्स, दीज 5 ग्रुप्स। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 4 यानी 5 - 1 k - 1 k नंबर ऑफ ग्रुप्स and -1 we lose 1 degree of freedom when we estimate 1 statistic. ये बिल्कुल सिमिलर है, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हम रिग्रेशन एनालिसिस में यहाँ पे एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यानी सम ऑफ स्क्वायर explained by
the independent variables included in the model. There are two sources of variation in the dependent variable. यहाँ पे हमारे spending जो है वो dependent variable है. तो इसमें जो sources of variation है वो different categories of different groups of goods and services हैं. तो इसको हम बहुत safely we can call it explain sum of square. And its degree of freedom is 5 categories. जिस तरह regression analysis में if you are including the number of independent variables, so basically it is the number of independent variables or total number of parameters minus 1. तो k minus 1 यानी 5 minus 1. ये इसी तरह within groups जो है it is equivalent to or tantamount to the residual sum of square. There are two sources of variation in the dependent variable. One known between groups जो हैं they are the known sources, and within जो है they are unknown or stochastic variable sources which are causing variation in spending. इसकी degree of freedom n minus k. N is the total sample size and k is the total number of groups here. Generally regression analysis में ये number of estimated parameters होता है n minus k. तो हमें जैसे मैंने बताया, as I mentioned earlier, the total sample size in our case is 26,280, and if I subtract 5 groups from here, so it comes out 26,275. This is the degree of freedom, and mean sum of square is actually the ratio of sum of square and degree of freedom. This is how it is calculated, and then by taking the ratio of these two gives us the value of F statistic, which is 729. We can also calculate it manually by dividing each sum of square by its corresponding degree of freedom, and then taking the ratio of these two gives us F value. इसी तरह we can also calculate the equivalent of R square, the coefficient of determination. Why I am saying equivalent of R square? Because we did not run actually regression. We did not estimate regression. We are estimating one-way ANNOVA. We are performing one-way ANNOVA test. The equivalent of R square here is actually eta square. Let me show you eta. What is eta? Eta square is actually this is this one, eta square. The numerator is explained sum of square, जो मैंने अभी आपको results में दिखाया, which is between groups, sum of square between groups divided by total sum of square. So I have actually chosen these values, and when we take the ratio of these two values, this is equivalent of R square, जिसको eta square यहाँ पे कहते हैं, which actually has the same meaning जिस तरह बाकी में हम करते हैं regression analysis में. ये आ गया. Then now why ANNOVA is important? Why F statistic is important? As I mentioned earlier, one of the assumptions of the one-way ANNOVA is homogeneity of the variance. So actually, when F is significant, what does that mean? It means our dependent variable, yani spending across different categories of goods are not identical. They are significantly different. Their our average expenditures on 5 different categories of goods and services are not the same. They are significantly different from here. Now, this actually test justifies for the application of post hoc test. अगर post hoc test में हम ये assume करें कि variances identical हैं, तो फिर हम ये टके टेस्ट वगैरह को हम चूज करते हैं. Actually, its full name is Tukey HSD. What is HSD? HSD is actually
honest significant difference. We are confident that we are rejecting the false null hypothesis. This is the meaning of HSD. Honest significant difference. Now, why there is need to apply this Tukey HSD when ANNOVA has already shown that there is significant difference? Remember, ANNOVA does not tell you, ANNOVA does not compare each group with another group separately. So there is no pairwise comparison of the mean expenditures in F-test. So for that purpose, in order to have pairwise comparison, for example, grocery average expenditures on grocery compared with average expenditures on retailing, average expenditures on entertainment, average expenditures on travel, and average expenditures on other products. Same is the case. Retail compared with other four, entertainment compared with other four. So this is called I, average expenditures on grocery, minus J, average expenditures on these products, and so on. तो ये जो डिफरेंस है ये हमें बताएगा if it is minus, तो इसका मतलब ये है कि these average expenditures are greater than the target category. Now here, retail, in case of retail, all the values are positive. That indicates that average expenditures on retail are higher than average expenditures on each category of grocery, entertainment, travel. And not only they are different, significantly different, but they are significantly different. The star indicates they are significantly different at the probability of less than 5%. ये significant level जिसको आप देख रहे हैं ये less than 1% है, और जहां पे ये significant नहीं है हम कहेंगे there is no significant difference. So ये this is the meaning of multiple comparison using Tukey test. So summing it up, I think we should join another session for further explanation. So see you in the next session for further explanation of results. Thank you.